Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Introduction to Bioinformatics class. This is our fifth week, and the lab. This is our lab session 9. Okay, in theory class, in our class, we have studied about what is evolution. We have talked about change in the organisms and how the organisms were evolved. Like जितने भी changes थे उनको हमने discuss किया था इसमें or there are changes in between the organisms, either in between the within the organisms हमने changes देखे थे और within different species हमने changes को देखा था. That is come under the term evolution. ओके अच्छा, एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए हमने फाइलोजेनी को डिस्कस किया था. फाइलोजेनी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि इंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स के दरमियान क्या चेंज आया और उनमें क्या एवोल्यूशन हुई. ठीक है, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमने फाइलोजेनी को पढ़ा एंड देन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हमने किया विद सम डूइंग सम एग्जांपल. हमने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किया. फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में बेसिकली क्या था कि आपने सीक्वेंसेस के सीक्वेंस फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में आपने ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट चेंजेस को देखा. उनमें कौन सा जो था वो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है, कौन से आउटग्रुप थे. ठीक है, एंड देन इसी तरह से सीक्वेंस एनालिसिस में भी आपने क्या किया था कि आपने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करके देखा कि उसके अंदर क्या चेंज आया है, कहाँ पे कौन सा बेस पेयर जो है वो चेंज आया था. ठीक है, इसको हम फाइलोजेनेटिक प्रेडिक्शन भी कहते हैं और एनालिसिस भी कहते हैं. हम प्रिडिक्ट ये कर रहे होते हैं कि यहाँ पे इस चेंज की वजह से ये डिजीज कॉज हो रही है, इस चेंज की वजह से ये ट्रेट है वगैरह. ठीक है, इस तरीके से हमने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस और प्रेडिक्शन जो था थ्योरी की क्लास में हमने इसको स्टडी किया था. नाउ वी विल लुक इनटू द रिकैप कि हमने रिकैप जो पिछला लैब सेशन था उसमें हमने कौन सा जो था एक्सपेरिमेंट किया था. दैट वाज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली जिसमें आप डीएनए के एम्प्लीफिकेशन करते हैं. कोई टारगेट रीजन होता है जिसको आप टारगेट सीक्वेंस होता है उसको आप एम्पलीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सीक्वेंसेस को. ठीक है, हमने जनरल एप्लीकेशन भी देखी थी. फिर उसके बाद हमने प्राइमर डिजाइनिंग की थी. प्राइमर डिजाइनिंग बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है उसकी जो उस एक्सपेरिमेंट की सक्सेसफुलनेस होती है वो प्राइमर की बेस पे कर रहा होता है. तो इस वजह से हमने प्राइमर डिजाइनिंग की थी और उसके डिफरेंट फैक्टर्स को देखा था कि फैक्टर्स को हमें अवॉइड करना है प्राइमर डिजाइनिंग में. फिर हमने NCBI का एक बहुत ही फेमस टूल है दैट इज प्राइमर ब्लास्ट. इसको यूज करते हुए हमने प्राइमर डिजाइनिंग की थी. इसके अलावा फिर हमने UCSC ब्राउजर को यूज करते हुए हमने प्राइमर डिजाइनिंग की और इन सिलिको प्राइमर इन सिलिको PCR हमने किया था. ठीक है, और this was about polymerase chain reaction what we have done in previous week. Okay, today's session is about phylogenetic analysis and prediction. So first of all, what we have to do step by step, find similar sequences using BLAST tool. सबसे पहले आपने क्या करना है, you have to retrieve a sequence from the NCBI database and then you have to use this basic local alignment tool, BLAST tool, to get the first top 10 sequences. इसका ये मतलब है कि अगर जो आपने sequence retrieve किया है उसका जो है मोस्ट सिमिलर सीक्वेंसेस जो है डेटाबेस से आप फेच कर लेते हैं. उनको फेच करने के बाद आपने क्या करना है, यूज ClustalW और Clustal Omega टूल फॉर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट. उसके बाद ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हमारे पास 10 मोस्ट सिमिलर सीक्वेंसेस आपको मिल जाएंगे एंड उनमें से हम क्या करेंगे, आप उनका सीक्वेंस एनालिसिस करेंगे कि उसमें कितना सिमिलैरिटी और कितना जो है सिमिलर रीजन है. ठीक है, और इसकी बेस पे हम क्या करेंगे, फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे. फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो भी सीक्वेंसेस हैं, हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं, उनको सबसे पहले तो हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर लें. ठीक है, there are many different tools but we will use ClustalW or we will use Clustal Omega. In this lab session we will do Clustal Omega. ठीक है, जैसे जैसे हम स्टेप परफॉर्म करेंगे you will get to know how we are doing these processes. ठीक है, कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए हमें MS से यानी कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के बाद हम उसकी बेस पे फाइलोजेनेटिक ट्री जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे. Okay, first of all we should have to go into the NCBI and then retrieve the sequence and save it on the and save it in Notepad.
Okay. Okay, first of all, you have to select this database protein sequence. You have to select database, that is protein sequence. Okay, go go to the NCBI database. You have to select the protein sequence and then find any sequence, just like we have already retrieved many sequences from this database, like spike protein of SARS-CoV-2. Okay, after getting the result, we will select any sequence from here, faster sequence. जैसे कि आपको पता है कि जो स्पाइक प्रोटीन है, इट्स अ सरफेस प्रोटीन ऑफ द कोरोना वायरस SARS-CoV-2. So we have get the result of spike protein. ठीक है, ये उसका फास्टर सीक्वेंस है. We will select this faster sequence and copy it and also paste it on your notepad for future use, just like I have done here. And then you have to go to the BLAST tool, search it on Google. This is also present on the NCBI NCBI website. Okay, you can also Google it on the search engine. You have to write it down here, BLAST tool in bioinformatics, and you will get the basic local alignment search tool. बेसिकली हम इस टूल में क्या करने वाले हैं कि जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी जो है ब्लास्ट टूल को यूज़ किया हुआ, दिस इज द बेसिक लोकल अलाइनमेंट. हम क्या करते हैं कि लोकल अलाइनमेंट करते हैं और देयर आर डिफरेंट टैब्स, लाइक न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस आप सर्च कर सकते हैं, और ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड को आप प्रोटीन में सर्च कर सकते हैं. दिस इज फॉर ब्लास्टेक्स एंड पी ब्लास्ट एंड मीन प्रोटीन को आप जो है ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन एक आपके पास टारगेट सीक्वेंस है, इसके सिमिलर सीक्वेंस आप गेट करना चाह रहे हैं, तो आप न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में जो है सर्च करें. बट वी हैव रिट्रीव द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, सो वी नीड सिमिलर प्रोटीन्स लाइक आवर टारगेट प्रोटीन्स. लाइक हमने इसके जो मोस्ट सिमिलर सीक्वेंसेस हैं, वी कैन गेट इट फ्रॉम प्रोटीन ब्लास्ट. हमने प्रोटीन का सीक्वेंस टारगेट सीक्वेंस इनपुट देंगे और प्रोटीन हम इसी तरह के जो सीक्वेंसेस हैं, like most similar जो sequences है, we will get it from the database. So click it here. Okay, here is the field for BLASTp. You have to paste your sequence here and select any database you want to, like protein database, or you can also, these are all for protein databases. UniProt is also a proteins database, so we will select any database, just like protein database, data bank, and also write down the organism. As we know, spike protein genome is sequences from the virus, so we have selected virus, and then leave all the parameters as default. So do blast, submit the result, and you have to wait for a while. Okay, this is the result of blast tool.
जो हमने प्रोटीन ब्लास्ट किया था लाइक BLASTp, और इसमें दिस इज द जॉब टाइटल वी हैव डन, और दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज डेटाबेस वी हैव सिलेक्टेड प्रोटीन डेटाबेस बैंक, और क्यूरी जो थी हमारा सीक्वेंस वो ये था, और डिस्क्रिप्शन इज लाइक इस तरीके से, एंड मल्टीपल मॉलिक्यूलर टाइप जो है और इतने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स थे आपके, ठीक है, और डिस्टेंस फ्री ऑफ रिजल्ट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो है 100 सीक्वेंसेस जो है उसने डेटाबेस से आपको फेच करके यहाँ पर रिजल्ट दे दिया, ठीक है। पीडीबी में जितना भी डेटाबेस था मोस्ट सिमिलर टू द सीक्वेंस जो हमने इनपुट दिया है, दिस इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस, और इसमें भी जो सीक्वेंस है जो सबसे ज्यादा मैच हुआ था वो दिस वन इज दिस वन, और इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपका मोस्ट क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस है वो ये था, सबसे ज्यादा मैच सीक्वेंस ये हुआ, एंड देन 95, 96 एंड 94, 93, इस तरीके से आपका जो सीक्वेंस है जितना 9% सबसे कम सीक्वेंस जो है इस वाले सीक्वेंस का मैच हो रहा था, ठीक है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, जो टॉप 10 सीक्वेंसेस है वो सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि दे आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड। तो यहाँ से आप एक सेशन आईडी के थ्रू जो है सीक्वेंस में जा सकते हैं और उसको कॉपी करके आप अपनी नोटपैड फाइल में या वर्ड फाइल में सेव कर सकते हैं, ठीक है। वन बाय वन यहाँ से आप सीक्वेंस ले और यू कैन कॉपी इट ऑन योर वर्ड फाइल और नोट फाइल, ठीक है। ये है, आपने क्या करना है, लाइक दिस इज द फास्टेस्ट सीक्वेंस एंड यू हैव टू सेव इट इन योर फाइल, लाइक हियर आई हैव डन, ठीक है। I have selected 6 sequences, so I can select one more sequence from here, like I will select the most a little bit different from it, but you have to select the top 10 sequences which is the most closely related sequences. So I will select this one, copy this sequence from the greater than sign, copy the sequence and paste it on your working file, like Word file or Notepad file, it depends on you. So here is my file, save it, and now next step is okay, next step is you have to Google it on like ClustalW. You have to search for it and open this link, ठीक है। This is www.ebi.ac.uk. This is the official website available, this tool on this website. This is like European Biological Institute website, ठीक है। So you can search it from here or open this link from here. So this is your ClustalW, where you have to perform the multiple sequence alignment before constructing a phylogenetic tree. So this is your sequence, FASTA format sequence. First of all, look into the ClustalW tool. Here, this is, you have to perform this step, multiple sequence alignment. The step one is enter your input sequences, okay. You have to enter your input sequences, not a single sequence. You can like this tool can align up to 4000 sequences. 4000 sequences means आप इतना जो data set है यहाँ पर input देते हैं और it will handle it. आप अगर वर्ड लाइक मैनुअली करते तो it takes a lot of time, but इस तरह की जो टूल है आपको इतने नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जो है यहाँ पर आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू सेलेक्ट प्रोटीन बिकॉज यू हैव get the result, you have get the sequence of protein, so select protein here और जितना भी आपने टॉप 10 sequences है यहाँ पर पेस्ट करें. This is your all sequences. I guess my
sequences are top 7 sequences. So paste it here. और आपको ये पता होना चाहिए हर सीक्वेंस जो है वो इस तरीके से जो है डिफरेंशिएट हो रहा है ग्रेटर देन साइन के साथ। सारे सीक्वेंसेस जो है डिफरेंशिएट हो रहे हैं। सेट योर पैरामीटर्स, यू कैन ClustalW with the character counts, आपको character counts में रिजल्ट मिलेगा, and submit your result. So we will wait for the result. It will give you the result within a minute. So this is your sequence alignment. You can see you have 12,000 of amino acids, sorry, 1,270 something. You have the amino acid sequences in almost all the sequences. तो एक पोजीशन 1 से लेकर यहाँ पर आप देखिए 20 सीक्वेंसेस को इसने यहाँ पर 20, 29 और आप देख सकते हैं लास्ट जो हमारा टारगेट जो हमारा सीक्वेंस था उसका फर्स्ट पोजीशन से लेकर लास्ट पोजीशन तक जो है सीक्वेंस अलाइनमेंट में उसने रिजल्ट दिखाया है कि दिस इज द वेरिएशन। यहाँ पर इस जगह पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। और जस्ट लाइक यू कैन सी दिस इज स्टेरिक। जहाँ पे स्टेरिक है इसका मतलब है कि आपका जो सीक्वेंस है एग्जैक्टली मैच हो रहा है, ठीक है। और जहाँ पे डॉट है आप ये देख सकते हैं कि डॉट में आपके अगर 7 सीक्वेंसेस हैं तो उसमें से 6 एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं ये वाली पोजीशन पे एच है, ये सारा मैच हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट सीक्वेंस था उसमें एफ था, तो वहां पे मतलब सिंपल एक स्लाइटली डिफरेंस है तो वो डॉट से शो कर रहा है, और अगर उसमें एक से ज्यादा सीक्वेंस मिसमैच हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट है, तो वो आपको कॉलम से शो कर रहा है। डॉट से बिल्कुल एक बेस पेयर का चेंज को शो कर रहा है, और अगर एक से ज्यादा चेंज आ रहा है तो वो आपको कॉलम से शो कर रहा है, और एस्ट्रिस्क जो है वो आपको शो कर रहा है कि एग्जैक्टली मैच हो रहा है। और we have selected our 7 sequences 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास 7 sequences को उसने पोजीशन 1 से लेके बिल्कुल लास्ट पोजीशन तक उसने चेक किया है, एंड we got the result in sequence alignment, ठीक है। ज्यादातर जो हमारे टॉप 10 सीक्वेंसेस में भी आप देख सकते हैं कि जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, और जहाँ पर और हमारे एंड पोजीशंस है जहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशन है। सो दिस इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, और हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट सीक्वेंसेस में कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है, कहाँ पे एवोल्यूशन है, कहाँ पे चेंज है, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर जीन के सीक्वेंसेस को जो है उनका डिफरेंस दे सकते हैं। अब यहाँ पर देयर इज अ फाइलोजेनेटिक ट्री और गाइडेड ट्री। यू कैन select phylogenetic tree and you will get the result। अच्छा, अब ये आपका है जो सीक्वेंस है, these sequences are most closely like इसमें से ये जो दो सीक्वेंसेस है they are closely related, इसमें से ये दो सीक्वेंसेस है they are closely related। अब ये इन दो ग्रुप्स के दरमियान there is a slightly difference, but ये सीक्वेंस है और this one sequence PDB 6CRB or this the first and last sequences are quite different to each other, ठीक है। this is the phylogenetic tree, और इसमें if you go back, this is guide tree, this is the cladogram, okay। you can see two sequences have close relation, and this is the rooted tree, this is the rooted tree, but it is the out group. These sequences are out group from these these two sequences, ठीक है। आउट ग्रुप उसको कहेंगे जो बिल्कुल ही जिसका सीक्वेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और जो सिमिलर है उनका आपस में क्लोज रिलेशन है, जस्ट लाइक दीज टू सीक्वेंसेस हैव क्लोज रिलेशन टू ईच अदर,
और इसी तरह से इन दोनों सीक्वेंसेस का क्लोजली रिलेशन है, ठीक है। अब इन दोनों का इसके साथ रिलेशन है और इस ग्रुप का इसके साथ रिलेशन है, बट यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो है स्टिल दे आर क्लोजली रिलेटेड, बट ये जो दो ग्रुप्स हैं दे हैव मेनी चेंजेस इन बिटवीन, लाइक देयर इज, इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन थी जिसमें बहुत ज्यादा मिसमैचेस थे, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट ClustalW, क्लस्टल ओमेगा, जिसमें आपने क्या किया था, इनपुट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करके आपने फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट किया। और इससे पहले आपने क्या किया था कि एक जो आपने इनपुट थी वो किस तरीके से ली थी, आपने सीक्वेंस जो था NCBI से जो था टारगेट सीक्वेंस वो आपने सेलेक्ट किया एंड उसको ब्लास्ट टूल से जो था उसके टॉप 10 सीक्वेंसेस सेलेक्ट कर लिए, और this result comes into the Clustal Omega tool, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी, और स्टिल अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम, और नाउ वी विल जस्ट रिवाइज। हमने NCBI टूल में डेटा इनपुट ही हमने NCBI टूल से NCBI वेबसाइट से आपने जाकर जो डेटाबेस है वहाँ से प्रोटीन डेटाबेस सेलेक्ट किया और जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसको retrieve किया, and then you have to do BLAST tool from where you can get the most similar sequences from the database, and then ClustalW में आपने या Clustal Omega use कर सकते। there are many different tools for multiple sequence alignment, जिसमें आपने Clustal Omega को use किया, उसमें आपने सीक्वेंस जो था मल्टीपल सीक्वेंसेस को अलाइन किया, अलाइनमेंट के बाद आपने फाइलोजेनेटिक कंस्ट्रक्शन की। अच्छा, दिस इज द मेथड फॉर फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन। इसके देयर आर 4 मेन फैमिलीज, पार्सिमनी, डिस्टेंस मेथड्स, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड्स, एंड देयर द फोर्थ वन इज बेसियन मेथड्स। हम नेक्स्ट कमिंग वीक में इनमें से कुछ एल्गोरिथम्स को जो है इसका ड्राई रन भी करेंगे। This is the parsimony. Parsimony is the character based algorithm. Distance based method is based on distances in between the sequences or the organisms, and UPGMA is also the distance based method. यहाँ पे आप UPGMA में देखिए 1 and 2 is the most closely related, 3 and 5 is the most closely related, 3 and 5 का 4 का relation है, इसलिए 3 and 5 का 3, 5 and 4 का यूनियन ले लिया। 1 and 2 का यूनियन था, अब 1 and 2 जो है वो इस सारे सीक्वेंस से रिलेशन है, मतलब they are sharing any common ancestor. This is maximum likelihood, is it is also the character based algorithm. Programs we will do in the next class is जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं manually can take weeks, like इतने अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा सीक्वेंसेस हैं तो it will be impossible to do manually, कि हम manually चेक करें कि कहाँ पे किस जगह पे पेज पर चेंज आ रहा है। तो हम इस तरीके से जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, just like ClustalW, Clustal Omega, mapped और different algorithm tools हैं जो आपको मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर देते हैं, ठीक है। चेक द अलाइनमेंट मेड बाय ClustalW और Clustal Omega। अच्छा, यहाँ पे आप इसको कलर्स में भी शो कर सकते हैं रिजल्ट। और नेक्स्ट जो लैब है उसमें हम अपकमिंग लैब वर्क हम क्या करेंगे, फाइलिफ टूल है और इसको हम यूज़ करेंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज द व्यू ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज, rooted tree, unrooted tree. This is unrooted tree and this is rooted tree. This is also a rooted tree. And there are many other algorithms for phylogenetic analysis using parsimony. So this is the reference. If you want to see any YouTube video, you can watch it out. And this is the exercise for R2. We will do it in upcoming sessions. Our data set is there is a very interesting thing, human genome from different countries. This is up to you if you want to do the human genome analysis, like for example, I will paste it here. Okay. Okay, this is the resource for data set. If you want to do a phylogenetic analysis among different countries, यहाँ पर
जैसे कि हम SARS-CoV-2 को स्टडी कर रहे थे और SARS-CoV-2 लाइक हमने प्रोटीन डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपके पास SARS-CoV-2 का फुल जीनोम आपको मिल सकता है और दिस होस्ट जो है वो ह्यूमन है और इसके अलावा इफ यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज डेटा सेट अवेलेबल हियर एंड यू कैन एनालाइज इट हियर। अच्छा, यहाँ पे कब पब्लिश हुआ था वो कलेक्शन डेट भी लिखी हुई है, होस्ट कौन है, ह्यूमन होमोसेपियंस है, और इसके बाद जो लोकेशन है वो चाइना एंड मेनी अदर डिफरेंट कंट्रीज लाइक here you can see China, Bangladesh, and if you scroll down, you will find it more different countries for SARS-CoV-2. तो आप यहाँ पर जो है sequence, this is accession ID. You can find it for China. आप different countries का जो sequences हैं वो इसी तरीके से अपनी एक word file बनाएं और उसमें different sequences को सेव करें और फिर उसका alignment करें और phylogenetic tree construct कर सकते हैं। ठीक है, so this is your work to do, an interesting work। और आप देखें कि डिफरेंट कंट्रीज में SARS-CoV-2 की क्या रेशियो थी, कितना सिमिलैरिटी है चाइना पाकिस्तान के दरमियान, देख सकते हैं डिफरेंट जो भी यहाँ पर डेटा सेट अवेलेबल है, यू कैन एनालाइज इट। ओके, इसी तरह से यू कैन सी वर्जन्स ऑफ कोरोना वायरसेस, just like you can see here versions of coronaviruses। यहाँ पे वर्जन्स ऑफ कोरोना वायरसेस। अच्छा, यहाँ पर ये है कि जो फर्स्ट कोरोना वायरस था दैट वाज अल्फा कोरोना वायरस एंड बीटा कोरोना वायरस। अच्छा, बीटा कोरोना वायरस में हमने जब हमने क्लासिफिकेशन की देखी थी कि वी हैव स्टडी 3 तरह के जो कोरोना वायरसेस है, हमने बीटा और बीटा कोरोना वायरसेस देखा था, जिसमें हमने मर्स देखा था दैट इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस था, फिर था सार्स दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, और इसी का जो नेक्स्ट वर्जन था दैट इज SARS-CoV-2 फ्रॉम विच वी आर सफरिंग राइट नाउ। ठीक है, और इसके बाद फिर डेल्टा, बीटा के बाद डेल्टा है एंड गामा कोरोना वायरसेस। ठीक है, तो this is the taxonomy। if you want to analyze from this data set you can also view कि इनके दरमियान क्या relation है। ठीक है, और ये आपको डेटा सेट यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह से आप डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ, दिस इज ऑल अबाउट today's lecture।